Now students, we are going to solve today illustration number 5. Now obviously this type of full-fledged sums are not going to come into your exam. They are not expected. Full-fledged sums are not there from this chapter. But then why we are doing this? We are doing this to understand the complete process of dissolution, so that for you making journal entries become very easy. तो ये जो सम है, ओके, उसको ध्यान से करना, कंसेप्ट समझना. तो whenever you will do the short sums, तुम्हें फिर कुछ भी कोखने की जरूरत पड़ेगी ना. You will be able to directly do the sum. Now come to this page 298. Now let's start with the balance sheet first. Kaushal, Krina and Krupansh are partners sharing profit and loss in proportion of 5:3:2. So underline 5:3:2. Okay, the balance sheet of the firm as on 30th September 2016 was as follows. Now capital Kaushal, Krina, Krupansh 50,000, 30,000, 20,000. Current account Kaushal, Krina. Now ये जो कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस है वो चले जाएंगे उनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में. Profit and loss account we have to distribute between partners in the ratio 5:3:2. So tick कर दो. Investment fluctuation fund will also be distributed 5:3:2. Okay, then Kaushal's loan. Now we have a partner whose loan is there. We will see what the adjustment is given, if any. Okay. Later on we see this. Now creditors, bills payable, liability. Then on the asset side, let's check out what we have. Cash will go to cash account. Now Krupansh current account, it is a debit balance. So be careful, we have to write this along with the opening balances. Machinery, investment, goodwill, stock, debtors, bad debt reserve, land and building, depreciation fund, motor car, depreciation fund. So we have this, this and this, all the three provisions. Now partners have decided to dissolve the firm on the date of balance sheet. Dissolution expense was of 20,000. We see this later. Creditors are paid at 10% discount. So we take creditors. Unexpected expense paid 10,000. यानी हमने इसका कोई प्रोविजन नहीं किया था, अचानक एक खर्चा आ गया, तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस 10,000. इसको भी बाद में देखते. 20,000 received from bad debts, which was return of 2 years back. 2 साल पहले कुछ हमने लॉस राइट ऑफ किया था, बैड डेट राइट ऑफ किया था, अचानक वो आके हमें पैसा दे रहा है, वो डेटर. तो बैड डेट्स रिकवरी we treat it separately. Investments taken by Kaushal. So I'll take investment. Realization of asset is given, land and building, motor car. So land and building, motor car. Then stock realized at book value. Nothing is realized for goodwill. So we take stock. Goodwill का अभी कुछ भी realize होने वाला नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ. Now full amount of debtors and machines is received. Debtors का full amount मिल गया, इसको मार्क कर देता हूं मैं.
and machine का full amount. So debtors machine full amount. Okay. Nothing else is given. Prepare necessary accounts. Now we have Kaushal's loan over here. So Kaushal's loan ke liye in the textbook solution it is given that you make Kaushal's loan account and pay him off. Okay. Alternatively, you may also transfer this to his current account. So right now we follow the textbook. We prepare Kaushal's loan account and that amount we transfer over there. Go through the sum once again and then let's start doing it. Okay, now let's start with the sum. Now, see in dissolution, what happens is we already have a balance sheet and it is decided to close the business. So we have to sell the assets, we have to pay off the liabilities, and what all reserves we have or accumulated losses we have will be transferred to partners. All provisions accounts will be closed because this firm is no longer a going concern. बिजनेस ही बंद हो रहा है, वो asset ही नहीं रहेंगे, तो उसके सामने कोई provision भी रहेंगे नहीं. Now let's start with the opening balances first. Capital 50,000, 30,000 and 20,000. So by what forward? 50,000, 30,000, 20,000. Okay. We go to current account opening balances, check current account. We have Kaushal and Krina 20,000, 10,000. Kaushal 20,000, Krina 10,000. Buy balance, bought forward. We also have debit balance, to balance, bought forward. Of Krupanch, check करो balance sheet में we had written debit balance 20,000. So Krupanch we write 20,000. So capital current account balances we have written. Now profit and loss account, I'll also tell you the entries. Okay, if you're not confident, you may scribble it right now and then later on do it. Or if you're confident, then fine, it will be a revision for you. Profit and loss account 1 lakh, ये हमारा liability side है, so it has a credit balance. So profit and loss account will be debited and partners capital account will be credited. 1 lakh 5:3:2. But here we have current account. So instead of capital account, we transfer it to current account by profit and loss account. 1 lakh, so 50,000, 30,000, 20,000. 5:3:2. So entry, how you will be able to make it is even from here you can make the entry. Current account credit ho raha hai and profit and loss account, by profit and loss account we have written, so it's a debit balance. Now we come back. Investment fluctuation fund. Investment fluctuation fund is considered as a part of reserve, so that is also to be transferred 10,000. So partners current account credit side by investment fluctuation fund account. $5,000, $3,000, $2,000. Here again the journal entry will be investment fluctuation fund account will be debited, Kaushal, Krina and Krupanch current account will be credited. Done.
So investment fluctuation now done. Kaushal's loan 50,000. We go to Kaushal's account, buy balance bought forward 50,000. Alternatively, you may have transferred it to partner's current account also. Okay, that's also fine. Now, creditors 2 lakh, bills payable 60,000. Now, all the liabilities are to be paid off and all assets are to be sold. So, all the liabilities and provision account. What are the liabilities and provision account? Creditors, bills payable, bad debt reserve, depreciation fund on building, and depreciation fund on motor car. Both all of them will be transferred to realization account. Now, how do we make the entry? Liabilities have a credit balance, provisions have a credit balance, तो हम इनको करेंगे डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट. Is this clear? So, realization account on the credit side by sundry liabilities. You may also write it separately if you want to. Okay, I'll write separately for you. You can even combine them. Now, what are the liabilities? Creditors, inner column, 2 lakh. Then bills payable, inner column, 60,000. So, outer column, 2 lakh 60,000. In the textbook, it is done separately, so I am following that. You may very well do it together. As such, this is full-fledged sum is not going to come in your exam, but in your further studies, it will definitely come. So you have to be prepared for it. Now, by provisions. Now we have provisions of bad debt reserve, depreciation fund on building, land and building, and on motor car. So bad debt reserve amount is 20,000. Then depreciation fund on land and building, again 20,000. And depreciation fund on motor car, 20,000. On motor car, sorry, 30,000. So underline this, outer column 30, 20, 20, 70,000. Should I proceed? Should I proceed? Okay, now you can see कि liability side पूरा close हो गया, या वो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में एज अ बैलेंसेस चला गया, या वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या वो कोई अपना खुद के अकाउंट में चला गया, जैसे कौशल्स लोन हमने नया अकाउंट खोल दिया तो इधर से निकाल दिया, और जो क्रेडिटर्स का बैलेंस था वो भी हमने क्लोज करके ट्रांसफर किया टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो इनका जर्नल एंट्रीज क्या बनेगा? यहाँ पे पहला क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट to realization account credit. This is the entry you will be passing. Then provisions के लिए bad debt reserve account will be debit, depreciation fund on land and building debit, depreciation fund on motor car debit to realization account credit. So this is how you will be passing the entries for both of them. Is this clear? Okay. Now
लेट्स गो ऑन द असेट साइड. सबसे पहले है कैश. सो कैश में लेट्स गो टू कैश एंड बैंक अकाउंट. 20,000. True balance bought forward 20,000. True punch current account we have already done. Then machinery. Now जितने भी फिक्स्ड असेट्स है, ओके, टेंजिबल, इनटेंजिबल और सारे असेट्स, करंट अकाउंट, करंट असेट्स, वो सबको हम ट्रांसफर करेंगे, क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ ये सब असेट्स का बैलेंस इज हमेशा, असेट इज ऑलवेज डेबिट, तो असेट्स को करेंगे क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट. सो वी राइट टू सन्ड्री असेट्स, ऐसा लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स, बट एंट्री में तो हम हर एक असेट्स को इंडिविजुअली लिख के एंट्री पास करेंगे. जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, देन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देन गुडविल अकाउंट. अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है, बट आई एम राइटिंग सो दैट यू नो कि एंट्री के टाइम पे तुम्हें ये सब याद रहे, इसके लिए. स्टॉक अकाउंट, डेटर्स always at the gross value, okay, that's the book value. Debtors, land and building, motor car, that's it. So write the amount, respective amount. Machinery 30,000, investment 50,000, गुडविल. नाउ ऐसा कहा है गुडविल कुछ रियलाइज नहीं हुआ, पर जो है उसको तो क्लोज करके ट्रांसफर करना ही पड़ेगा. 10,000 स्टॉक, डेटर्स ग्रॉस 1,20,000, देन लैंड एंड बिल्डिंग 2,20,000 and motor car 1,30,000. So over here do the total. 5,80,000. Now if you had to make an entry, you will make the entry once again. I am repeating it. Machinery account will be credited, investment will be credited, goodwill will be credited, stock will be credited, debtors will be credited, land and building credit, motor car credit. So debit क्या होगा? Realization account will be debited, and that's why it has come on the debit side of realization account. और यहाँ से भी तुम डायरेक्टली एंट्री बना सकते हो कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, सो डेबिट टू मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर. So is the entry clear? You understood all the entries done so far? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ ये हो गया हमारा assets. So सारे assets हमने क्लोज करके ट्रांसफर कर दिए टू रियलाइजेशन अकाउंट. सारे प्रोविजन क्लोज करके ट्रांसफर कर दिए टू रियलाइजेशन अकाउंट. यानी ये जो बैलेंस शीट है, अब ये बैलेंस शीट रहा ही नहीं. नाउ देयर इज नो बैलेंस शीट. बैलेंस शीट खत्म हो गया बिकॉज ऑफ बिजनेस ही नहीं रहा है. यहाँ पे नया बैलेंस शीट अब बनेगा ही नहीं. पुराना जो था वो पूरा हमने क्लोज कर दिया है. तो ये जो पुराना बैलेंस शीट है वो पूरा हो जाएगा कैंसल. ओके, यहाँ पे कुछ भी अब रहना चाहिए नहीं. All of you understood this? We are closing the business. तो जितने भी assets, liabilities, जितना भी बैलेंस शीट आइटम है वो सबको सबसे पहले हमें कर देना है जीरो. We have to remove from the balance sheet.
and either we close them and we transfer to realization account, or we open new account or those respective account and transfer the balances over there. Is this clear, all of you? ये पता चल गया सबको डिसोल्यूशन चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट? Any doubt, anyone? Okay, so let's proceed. Now, ये तो हो गया सब, हमने ट्रांसफर कर दिया, वेरी नाइस. नाउ हमें क्या करना है? अब जो असेट्स को हमने क्लोज करके ट्रांसफर किया, सबसे पहले पैसा चाहिए, तो सबसे पहले असेट्स को बेचना पड़ेगा. तो यहाँ पे various adjustments are given, but first of all we should always sell our assets. Now that is the right way, that is the order of going in dissolution, but over here you can follow the adjustments and can also do it. Now what we do is सबसे पहले हम assets को बेच देते. Let's follow that कि सबसे पहले asset को बेच दो. So we go one by one to each asset. Keep textbook in front of you. Keep textbook in front of you. Okay, now whenever you sell the asset, cash comes in. So cash or bank account will be debited. So credit क्या होगा? Credit होगा realization account. Is this clear? So let's write the entry for it first. By cash account. Cash comes in, so cash account will be debited and realization account will be credited. And that's why we are writing it on the credit side of realization account. I hope all of you understood this. Now, let's start liquidating one by one. Now you know इतने हमारे assets है ही, तो यहाँ पे इसके बारे में अगर कोई information adjustment में दिया है तो fine. अगर नहीं दिया है तो except goodwill, everything will be realized at the book value. Now what is book value? This one is the book value or this one is the balance sheet value. यानी मान लो अगर कोई इंफॉर्मेशन लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइजेशन के लिए दिया नहीं था, तो हम ऐसा ही मान लेते कि लैंड एंड बिल्डिंग 2,20,000 में बिक गया. मोटर कार के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम ऐसा मानते कि हमने मोटर कार 1,30,000 में बेच दिया. बट गुडविल के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो हम ऐसा मानेंगे कि गुडविल के लिए हमें कोई भी पैसा मिला नहीं. Because goodwill, patent, copyright and trademark are our intangible asset. So if no information is given, nothing will be realized. Is this clear, all of you? Now let's start one by one. एक काम करता हूँ मैं, ये सारे assets को यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ, so that I don't miss out anything. So that I don't miss out anything. तो तुम भी ऐसा ही करो, सारे assets को लिख दो. Now, सबसे पहले let's go one by one. That's the best way to do it so that we don't miss out anything. Machinery. Now, machinery के लिए क्या एडजस्टमेंट दिया है? Let's check out machinery. Machinery, full amount of debtors and machine is received. So machine का full amount हमें मिल गया. Machine था 30,000, तो हमें भी 30,000 मिल गया. Debtors का भी information दिया ही है कि debtors and machine is received, तो साथ में लिख ही देते हैं. Debtors का कितना मिला? 1,20,000.
Then let's go for what's given for investment and all. Investment was taken by Kaushal for 60,000. इसका journal entry please लिखो. इसका journal entry please लिखो. Now, investment taken over by Kaushal. So Kaushal is the receiver. Kaushal's current account will be debited. अब हम credit किसको करेंगे? Can you tell me? Investment को या realization को? To realization account. रियलाइजेशन, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट जितना भी था वो ऑलरेडी क्लोज होके रियलाइजेशन अकाउंट में चला गया है. सो हियर द एंट्री विल बी, प्लीज राइट द एंट्री, कौशल्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. कौशल्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. सो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में ये इन्वेस्टमेंट जो है इट इज टेकन ओवर बाय कौशल. तो इसको यहाँ से हमें निकाल देना पड़ेगा या यहाँ पे डैश कर दो. ओके, दिस इज टेकन ओवर बाय कौशल एट 60,000. सो इसको अलग से लिखना पड़ेगा. सो वी राइट बाय कौशल्स करंट अकाउंट. By Kaushal's current account, bracket में you write investment. कितने में इन्वेस्टमेंट दिया उसने? 60,000. डायरेक्टली आउटर कॉलम. ओवर ईयर अगर तुमने इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसके सामने 0 लिख दो. सेकेंड इफेक्ट, करंट अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौशल 60,000 में लेके गया इन्वेस्टमेंट. If you want, you can write in bracket investment. All of you understood the entry? All of you understood the entry? किसी को कोई doubt? Okay. Now let's proceed. अब इन्वेस्टमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, गुडविल, स्टॉक, land and building. Let's go to the next adjustment and see what is given. Realization of land and building 2,20,000 and motor car 80. Land and building is 2,20,000 and motor car 80,000. Just put the amount. Now अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो वी वुड हैव टेकन मोटर कार एट द बुक वैल्यू. स्टॉक रियलाइज एट बुक वैल्यू एंड नथिंग इज रियलाइज फॉर गुडविल. स्टॉक का अकाउंट में कितना बैलेंस है? स्टॉक इज 10,000. तो 10,000 हमने रियलाइज कर दिया एंड गुडविल रियलाइज नथिंग, तो 0 कर दो वहां पे. सबका टोटल कर लो अंडरलाइन करके. 4,60,000. So 4,60,000 कैश मिला. नाउ एक इफेक्ट इधर आ गया, दूसरा इफेक्ट विल गो टू दूसरा इफेक्ट विल गो टू कैश अकाउंट. सो लेट्स गो टू कैश अकाउंट. इन कैश अकाउंट नाउ सी कैसे करना है. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट. सो वी ट्रांसफर इट ओवर हियर. To realization account. Now you may write the details. Okay, the details are like this: machinery, investment. Machinery, don't write investment now because we know nothing is realized. Machinery and then stock, debtor, land and building and motor car. Write the amount in the inner column, 30,000.
10,000, 1,20,000, 2,20,000, and 80,000. Always cross verify 4,60,000. So to realization account, in the cash and bank account, we write all the details. So अब हमने कैश कलेक्ट कर लिया बाय सेलिंग द असेट. इसका एंट्री क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है. कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. टेक्स्ट बुक में टू मशीनरी टू स्टॉक टू डेटर दिया है, कैश एंड बैंक में वो गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. हम क्रेडिट करेंगे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट को, फिर से असेट्स को क्रेडिट करेंगे नहीं, क्योंकि अब उनका बैलेंस रहा ही नहीं है. Let's go to the next one now. Now cash आ गया, so now पैसा जैसे आया है, चलो पे करना चालू कर देते हैं. सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस 20,000. So realization account में let's first write to cash account. इसके नीचे हम सारी डिटेल्स लिख लेंगे कि किसको किसको पैसा दे रहे हैं. सबसे पहला डिसोल्यूशन एक्सपेंस. Dissolution expense is 20,000. Then creditors. Creditors के लिए ऐसा information दिया, are paid at 10% discount. So creditors are 2 lakh. उसका 10% discount. So it will be 1,80,000. Now let's proceed ahead. Unexpected expense paid 10,000. Unexpected expense paid 10,000. So it is an unrecorded liability what we are paying. Unexpected था, पहले बैलेंस शीट में कहीं नहीं था. So directly realization account debit to cash account credit. So to cash account में inner column में we write unexpected expense 10,000. Next 20,000 रिसीव्ड बाद में आते हैं. पहले अब हम सारा पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं जो रिकवर हुआ समथिंग विच वाज अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. नाउ डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑलरेडी दिया है, क्रेडिटर्स ऑलरेडी दिया है. अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस इसमें ऑलरेडी दिया है कि 10,000 अनएक्सपेक्टेड हमने पे किया. बट लायबिलिटी तो हमारा दो था, क्रेडिटर्स भी था और बिल्स पेएबल भी था. अब बिल्स पेएबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो क्या हम इसको पे नहीं करेंगे? शुड वी पे और शुड वी नॉट पे? Should we pay bills payable or not? चलो रिप्लाई दो फटाफट. Let me unmute you. Okay. क्या करेंगे इसका? बिल्स पेएबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम पे करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या कहा, क्या करेंगे हम इसका? पे करेंगे. ओके, बिकॉज लायबिलिटी है. अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि पैसा दिया ही नहीं, चलो अपना हो गया. नहीं, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो वी हैव टू पे एट द बुक value. All of you understood this? Any doubt in this? So let's go and give the effect. So bills payable 60,000.
Now, creditors, bills payable, unexpected expense, dissolution expense, total कर लो 2,70,000. नाउ मान लो कि तुमने ऐसा टोटल कर दिया, उसके बाद कुछ और आया पेमेंट एडजस्टमेंट में जो तुम्हारा ध्यान नहीं था, तो फिर से यू कैन राइट टू कैश एंड राइट इट. ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. नाउ कैश में हमने वी आर पेइंग मनी, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. सो लेट्स गो टू कैश अकाउंट. Cash account on the credit side by realization account. We write the amount. Resolution expenses 20,000. Creditors are 1,80,000. Unexpected expense 10,000 and bills payable 60,000. Always cross verify 2,70,000. Next 2,70,000. Now, how will you make the journal entry? Very simple. Over here, realization account debit to cash account credit. We are making payment, cash goes out. Now, let's go to the adjustments and see what is left. 20,000 received from bad debts, which was written off 2 years back. So again, we are receiving this money unexpected, exceptional. 20,000 आ गया, पैसा मिल गया. So the entry will be cash account debit to realization account credit. So realization account on credit side, we write by cash, bad debts recovered. We recovered bad debts of 20,000, which were written off earlier. Now again cash, so let's give the second effect. So cash account में debit side to realization account, bracket में bad debts recovered or returned. 20,000. चेक कर लो सब एडजस्टमेंट्स हो गया. इन्वेस्टमेंट असेट्स, यस यस ऑल डन. चेक कर लो सारे असेट्स का इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ पे. यस, लायबिलिटीज पे ऑफ हो गया. प्रोविजंस का हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसफर कर देना है. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू पे अटेंशन फॉर अ व्हाइल. अब यहाँ पे ध्यान दो, मोटर कार 1,30,000 था. So motor car 1,30,000 was the book value. We sold for 80,000. We sold for 80,000. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसमें जो नुकसान हुआ वो ऑटोमेटिक रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो गया. कैसे एडजस्ट हुआ? डेबिट साइड आ गया 1,30,000, क्रेडिट साइड आ गया 80,000. सो लॉस हो गया 50,000. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इट्स नॉट अ रीवैल्यूएशन अकाउंट. कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर रिवैल्यूएशन की तरह हम इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं लिखते. यहाँ पे ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अब वो असेट ही नहीं रहा है, तो उसमें इंक्रीज डिक्रीज क्या, असेट ही जा रहा है. तो पहला स्टेप है कि असेट को हम ट्रांसफर करते रियलाइजेशन अकाउंट में, और उसके सामने जितना भी पैसा आया वो हम लिखते हैं ऑन द क्रेडिट साइड. तो ऑटोमेटिक उसका लॉस या इनकम एडजस्ट हो जाएगा, लॉस या गेन एडजस्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट. नाउ लेट्स गो टू द क्रेडिट साइड एंड डू द टोटल. Credit side seems more or debit side seems more? Just a minute.
Okay, bhai. Let's check out first before we go and do the total of credit side. You do it on in rough. You see which side is more, 8 lakh 50 and over here 8 lakh 70. So credit side is more. So I do the total. Do the total. So total comes to 8 lakh 70,000 on the credit side. Same total on the debit side. So credit side is more than debit side, so it is a profit. So let's give it to the partners. So two partners, current account. Now Kaushal, Reena, Rupansh. Ratio is 5 is to 3 is to 2. And the amount is 8 lakh 70 minus 5 lakh 80 and 2 lakh 70. So it comes to 20,000. Or you can do it manually. 8 lakh 70,000 minus 5 lakh 80,000 minus 2 lakh 70,000. 20,000. This 20,000 goes to Kaushal, Krina, and Krupanj in the ratio 5 is to 3 is to 2. So 10. So 10,000, 6,000, 4,000. Underline this and we transfer this to current account by realization account. 10,000, 6,000, 4,000. Now, okay, now over here we can balance them and current account balances we have to transfer to capital account. So we are going as per the flow of the format. Okay, if you have made loan account before this, you can finish off the loan account as well. Okay, I'm going as per this flow. So now we need to balance all of the three. So all the three, I think credit side, wait, let me see. Yes, credit side is more. Okay, I leave it. આગળ કશો ડૂચો ગળી
Okay, so we do the total over here, 26,000. Now, same thing we write over here. On the debit side, and we find the balance. Now this balance of current account will be transferred to capital account, and from that we will pay off cash to the partners. So to capital account, difference. So 85 minus 60, 25,000, 49,000 and 6,000. Now this will be transferred, this to capital account. This will be transferred to capital account. So by current account, 25,000, 49,000 and 6,000. Now, before we close the capital account, okay, let's pay off the liability of Kaushal, which is still pending. So to cash, 50,000. We balance it. Account is squared up, so we total it. Rather, that's the right way of putting it. Now to cash. So by Kaushal's loan account. By Kaushal's loan account, we paid 50,000. So Kaushal account is also closed. Now let's go over here, and what all is the balance of capital account we will pay to the partners in cash. So let's do the total. Credit side is more for all the three. Balance it. This balance of capital account is the amount what we have to pay to the partners. So to cash account, you can write the word difference or balancing fee. 75,000, 79,000, 26,000. Cash account, we are making the payment. So by partners, capital account. Let's transfer it. So write the name Kaushal, Reena to Punch. We write the amount 75,000, 79,000, 26,000. Do the total, 1,80,000. Now you can see everything is closed except cash. Now our cash account should tally.
So let's check whether it is tallying or not. Five lakh. So cash account is also closed. So what we can see is everything is closed. All the assets are sold, liabilities are paid off, reserves and reserves are transferred to partners capital account, provisions accounts are closed, and whatever amount is left after that is paid to the partners. So just go through the sum once again, see if you have any doubt. Now you can make journal entries from this as well. Okay, you have to see what's happening over here. We are paying to the partners, so entry will be partners capital account will be debited and cash account will be credited. Now for transfer from current account to capital account, you can make entry from this. You can see current account debit side. So partners, all the three partners current account will be debited and their respective capital account will be credited, which is happening over here. हर एक बिजनेस में ऐसा assumption होता है that the life of the business is infinite and the business is going to go on and on and on and on. बट यहाँ पे गोइंग कंसर्न है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस हो गया है बंद. हमारा पूरा बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं that is made on the assumption that the business is going to go on and on and on and on. अब बैलेंस शीट का मतलब ही ये है, it's a sheet of paper which contains balances of various accounts which are closing for this year and opening for the next year. पर next year भाई business ही नहीं है, तो बैलेंस शीट कहाँ से बनेगा? तो जो बैलेंस शीट पुराना था उसको क्लोज कर दिया, सारे असेट लायबिलिटी को कैपिटल में और असेट लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में, करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में, कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस कैश या बैंक अकाउंट में. इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है तो उनको ट्रांसफर कर दिया टू पार्टनर्स. प्रोविजंस है तो उसको भी क्लोज करके रियलाइजेशन में डाल दिया. यानी ये जितने भी लोग बैलेंस शीट में थे उन सबको निकाल दो और असेट लायबिलिटी और प्रोविजंस को रियलाइजेशन अकाउंट में कैद कर दो, उसमें उधर उनको ट्रांसफर कर दो. और इसके बाद we start the actual process of dissolution, that is selling the assets, paying off the liabilities. What all surplus is left or there is a deficit, it will be transferred to partners. In what ratio? In profit sharing ratio. Is this clear? ये dissolution का तुम basic chapter और basic concepts पढ़ रहे हो. आगे तुम जाके ऐसे chapters पढ़ोगे dissolution के जहां पे जो फॉर्म है उसके पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं, सफिशिएंट फंड्स नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट असेट्स नहीं है कि हम हमारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर सके, तो उसमें कैसे जाना है, कानून क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या कहते हैं, वो सब एडवांस स्टडीज में आएगा इन योर FY BCom, FY BBA, CA, CS. ओके, सो ये सब आगे आने वाला ही है. तो ये चैप्टर नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेटिंग मार्क्स बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग दिस कंसेप्ट एंड द प्रोसेस ऑफ dissolution. You have to prepare. Is this clear all of you? So that's it. किसी को कोई डाउट है तो can wait, rest all can go. Bye bye all.